Hello learners, welcome back to our channel Speak Smooth. Every word in the English language has its own story to tell. हमारे सुबह पार्क में रनिंग करने से लेकर ट्रैक पार रेसिंग करने तक या एक इमोशनल मूवी देखते हुए आपके चीक से काजल बहने तक या एक बिजनेस चलाने से लेकर एक मीटिंग करने तक हर कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का अपना अलग मीनिंग है. How fascinating, isn't it? Hey there, language lovers. Welcome back to our channel. Today, we have an electrifying episode lined up for you. Join us on journey of discovering how a single word can transform its meaning in various contexts. But before that, don't forget to hit that like button and subscribe if you haven't already. Today, we are going to explore the word run. We all know running is more than just a form of exercise. Let's dive in. सुबह पार्क में रनिंग करनी हो या ट्रेडमिल पा हम उसको इस तरह बोलते हैं. I enjoy going for a run in the park every morning to stay active. After a long day at work, I like to run on the treadmill to de-stress. The kids love to run around and play tag in the backyard. हम यहाँ रन को फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. जब हम बिजनेस चलाने की बात करते हैं या मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की वहाँ हम रन को इस तरह यूज करेंगे. John is planning to run his own small business and hopes to be successful. The company is looking to run a marketing campaign to promote their new product. The team will run a meeting to discuss the project's progress and future plans. यहाँ हम रन को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. आप सबके साथ शायद ये बचपन में जरूर हुआ होगा कि स्कूल बस के लिए लेट ही हो गए. यहाँ हम रन को ऐसे यूज करेंगे. Hurry up! We need to run to catch the bus before it leaves. और काफी बार ऑफिस में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की डेडलाइन भी मिलती है. यहाँ हम यूज करेंगे ऐसे. We are running out of time to finish the project before the deadline. कभी हमारा काफी बिजी दिन होता है. टाइम कम और काम ज्यादा जैसे यहाँ. I need to run to the post office to mail some packages and then run to the bank to deposit a check. यहाँ हमने रन को टाइम सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करा है. चलिए रन को अब हम नेचर के लिए कैसे यूज करेंगे देखते हैं. ट्रैकिंग करते हुए जब हमें एक रिवर दिखती है तो वो व्यू को और सुंदर बना देती है. The river runs through the valley, creating a picturesque landscape. और वहीं पर जब हमें तेज हवा चलने की आवाज आती है तो काफी अच्छी लगती है. वहां हम कहेंगे The wind runs through the trees, making a soothing sound. और कभी एनिमल्स भी घूमते दिख जाते हैं. वह ऐसे यूज करेंगे. The horse runs freely in the meadow, enjoying its time in nature. यहाँ हमने रन को नेचर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करा है. स्कूल में इलेक्शंस लड़ना हो या ग्रुप प्रोजेक्ट करना हो या कोई चैरिटी देखते हैं वहाँ रन को कैसे यूज करेंगे. My younger brother will run for class president in the upcoming school elections. The students are excited about the school's annual charity run for a good cause. The teacher asked us to run a group project to learn teamwork and cooperation. यहाँ हमने स्कूल कॉन्टेक्स्ट की बात करी है. आगे बढ़ने से पहले आप सब मुझे अपना फेवरेट वर्ड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे and how it changes meaning in different contexts. And, of course, hit that subscribe button. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रन को ट्रांसपोर्टेशन कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की. We missed the train, so we will have to run to catch the next one. Can you run to the store and grab some groceries on your way home?
The buses usually run every 15 minutes during rush hour. Let's see how we would use run in sports context. The athletes were competing fiercely in the 100-meter sprint run. The soccer player made a brilliant run down the field, scoring a goal. The marathon runners are preparing for the long-distance run next weekend. एक फैक्ट्री के चलने से लेकर एक कार का इंजन चलने तक मशीनरी कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसे कहेंगे, The factory runs 24/7 to meet the high demand for its products. Make sure to run a test on the new software before implementing it. The car engine runs smoothly after the recent repair. खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाए और आपको जाना पड़े लेने या यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए कुकिंग कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसे कहेंगे, I need to run to the grocery store to buy some ingredients for tonight's dinner. Can you run the dishwasher after we finish eating? She's a fantastic cook. Her restaurant runs successfully because of her delicious dishes. And in emotional context, this is how we use excitement runs through the crowd as the concert begins. I felt a wave of relief run over me when I heard the good news. Fear and anxiety can run high during exams. And there you have it, folks. The remarkable journey of the word run in its various contexts: physical, leadership, natural, time sensitive. If you enjoyed this thrilling word ride, don't forget to give us a thumbs up and share it. Leave a comment below telling us your favorite context of run or any other exciting word you'd like us to explore next. Thanks for joining us today. Until next time, keep learning and keep running. See you soon.